Yeah, good morning, students. Welcome to today's lecture. So, I think in our last lecture we had started with the pressure measurement. Okay, we had seen what is manometer and what are mechanical gauges. Okay, we had started with manometers. So, manometers are nothing but these are the devices whose one end is always connected to the point where pressure is to be measured, and other end is free to atmosphere. Okay, the most simplest type of manometer which we had seen is piezometers. Okay, so piezometer is simply a glass tube, a straight glass tube, which is connected to the point where pressure is to be measured. Okay, while other end is open to atmosphere. Okay, we had seen for pressure measurement, the pressure at any point is given by P equals to rho g h. Okay, after that we had started with second type of manometer, that is U-tube manometer. Okay, so for U-tube manometer, it is a special type of tube which is bent in the shape of English letter U. So one is end is connected to the point where pressure is to be measured, while other end is always free to atmosphere. Okay. After that, we had seen the equation for calculating the pressure, unknown pressure. So that P equals to uh, bracket rho g h2 minus rho g h1, rho 1 v g h1. Okay, rho 2 g h2 minus rho 1 g h1. Okay, so ये डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे how to derive this. Then U2 manometer can also be used for measurement of vacuum pressure. Okay, here P will be minus of bracket rho 2 gh2 plus rho 1 gh1. Here negative sign indicates the pressure is below atmospheric pressure. I think we had solved the problem on it. Okay, now today we are going to start with the next type of manometers that are called as sensitive manometer. So first of all, what is sensitivity? So there are some manometers which are able to sense or measure very small pressure. Okay, वो छोटे से छोटा प्रेशर मेजर कर सकते हैं और बेसिकली आपको आउटपुट में उसका बिगर डिस्प्लेसमेंट देंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर मेजर कर यूज कर रहे हो और आप एकदम स्मॉल प्रेशर मेजर कर रहे हो 0.1 बार और 0.01 बार. ओके, सो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका जो यूट्यूब मैनोमीटर में रीडिंग दिखेगा. ओके, आपने हेवियर फ्लूइड यूज किया मर्क्यूरी, तो ऐसा हो सकता है कि ये है लेफ्ट साइड में है 10 और राइट साइड में 10.1. तो ये 1 mm का एरर या 1 mm का मेजरमेंट आपके नेकेड आइज से बहुत नेग्लिजिबल होने के कारण आपको दिखेगा बिल. ओके, सो ऑल्दो स्मॉल प्रेशर चेंज इज देयर और स्मॉल प्रेशर इज देयर, बट यू आर नॉट एबल टू सेंस दैट प्रेशर. ओके, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर. ओके, तो ये जो सेंसिटिव मैनोमीटर ये क्या होता है, ये 1 mm को 10 mm एम्पलीफाई कर देंगे. ओके, तो स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो यूजिंग सेंसिटिव मैनोमीटर्स. So first type of sensitive manometer which we are going to see, that is single tube manometer. Okay, so basically what happens in single tube manometer, in single tube manometer the assembly consists of a U-tube manometer which is connected to a reservoir. Okay, so this reservoir is also a glass tube whose area is capital A. Okay, and this capital A, it will be very bigger, 100 times bigger than area of the tube small a. Okay, it's a small a 0.1 मीटर स्क्वायर है. ओके, या फिर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है या फिर 5 mm डायमीटर है ट्यूब का. तो बेसिकली रिजर्वायर का डायमीटर जो रहेगा वो 50 mm. ओके, 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के लिए. ओके, so the area of the reservoir is very high as compared to area of the tube. Okay, and the U-tube is connected to this reservoir, and the manometric fluid is filled in reservoir and tube. Okay, initially when initially when this assembly of single tube manometer, it is open to atmosphere, दोनों end open to atmosphere है. Okay, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लेवल XX तक है, लेवल XX तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेफ्ट लिम में भी रहेगा और राइट लिम में भी रहेगा. ओके, इन बोथ द केस, इन बोथ द साइड, ओके, you will find the same level of manometric fluid. Okay, now suppose this single tube manometer is connected to any pipe A.
ओके, कोई पाइप है या सिस्टम ए को आपने कनेक्ट किया, सो व्हाट विल हैपन, जो आपका सिस्टम का फ्लूइड है, ओके, और सिस्टम का जो प्रेशर है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर द फ्लूइड विल एंटर द रिजर्वायर, ओके, and it will going to push the reservoir in downward direction. Okay, so new level will be yy. Okay, you can see left limb में new level कितना आएगा yy. Okay, now लेफ्ट लिम्ब में क्या हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है कैपिटल ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा एच. ओके, तो कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नीचे डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इन लेफ्ट लिम्ब, इट विल बी ए इनटू डेल्टा एच. ओके, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड पुश डाउन. ओके, अभी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड पुश डाउन हुआ है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिम्ब में ट्रैवल करेगा एंड इट विल स्टार्ट टू राइज अपवर्ड इन लेफ्ट लिम्ब. ओके, वो राइट लिम्ब से पुश होगा, और वही जितना वॉल्यूम पुश हुआ है वो राइट साइड में इंक्रीज होगा. सो यू विल ऑब्जर्व इन द राइट साइड द लेवल ऑफ लिक्विड राइज. ओके, इट विल बी H2. ओके, तो यहाँ पे H2 राइज होगा, एंड इसका एरिया कितना है स्मॉल है. तो कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड राइज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड राइज इज स्मॉल a इंटू H2. ओके, सो लेफ्ट साइड में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पुश हुआ है नीचे कैपिटल A इंटू डेल्टा H, और राइट साइड में कितना राइज हुआ है स्मॉल a इंटू H2. ओके, और बेसिकली ये दोनों सेम लिक्विड रहेंगे, जो लेफ्ट साइड से पुश होगा वही राइट साइड से राइज होगा. ओके, सो दिस टू वॉल्यूम शुड बी सेम. Okay, therefore capital A into delta H, this should be equals to small a into H2. Okay, now we know this capital A is very bigger as compared to small a. Okay, और ये दोनों का प्रोडक्ट से इक्वल करने के लिए basically this delta H will be very small as compared to H2. ओके, दैट मीन्स आप स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हो और डेल्टा एच जो है वो 1 mm है, 2 mm है, बट राइट साइड पे आपको कितना राइज मिलेगा 10 mm 20 mm. ओके, लेफ्ट साइड का 1 mm 2 mm आप ह्यूमन एरर के कारण नोट डाउन नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट राइट साइड का जो H2 है, ओके, ये 20 mm 30 mm रहेगा. ओके, और आप कोई भी नेकेड आई से 20 mm 30 mm का राइज निगलेक्ट नहीं कर सकते. ओके, so in this way the sensitivity or accuracy of the instrument has increased. Okay, for even for very small pressure measurement. Okay, therefore the single tube manometer is a type of sensitive manometer. So is the working understood? Okay, after that we will see the uh, derivation for it. So let delta H will be the fall of heavier liquid in right side of the reservoir, left side of the reservoir. Okay, and H2 is the rise of heavy liquid in right limb. Okay, as shown in the figure. Then H1 is the height of center of the pipe. Okay, this is H1, height of center of the pipe from the previous level XX. Okay, and PA is the pressure at point A, unknown pressure at point A. Is the cross section area of reservoir, small is the cross section area of right limb. Okay, whatever the liquid present in pipe, its specific gravity is S1, and whatever the manometric fluid or heavier fluid, its specific gravity is S2. Therefore ρ1 and ρ2 are the density. Okay, so basically as the volume of liquid pushed and volume of liquid rise will be same, so fall of heavy liquid will cause the rise of heavy liquid in right limb. Okay, therefore capital into delta H equals to small a into H2. Okay, so we can say delta H equals to small a by capital A into H2. Now we will apply our equation on left limb and right limb. Okay, so we will consider the new level as any datum yy as shown in the figure. Okay, then the pressure on right limb. So right limb में क्या है, right limb में basically yy से delta h है. Okay, delta h और H2. Okay, so this total length from yy to this level, this will be H2 plus delta H. Okay, यहाँ पे fluid कौन सा है, fluid का density ρ2 है. Okay, and okay, so basically pressure कितना रहेगा right side में, it will be ρ2g into H2 plus delta H. Okay,
तो राइट बीम का प्रेशर कितना रहेगा, ρ2g H2 plus delta H. So we will call this an equation A. Similarly, we will apply the equation on left limb. So left limb में क्या हो रहा है, left limb में basically 1 minute, ये जो सेंटर ऑफ द पाइप है यहाँ से लेके लेवल YY तक फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ρ1 है, ओके, और ये लेंथ कितना है H1 प्लस डेल्टा H, ओके। सो यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा YY पे, it will be rho1 g h1 plus delta h, okay. So it will be rho1 g h1 plus delta h plus a का pressure unknown है, so we will call it as plus a, okay. Or you can start from point A, so it is PA plus we are going in downward direction, so in downward direction it will be rho1 g h1 plus delta h, okay. So PA plus rho1 g h1 plus delta h, okay. Then on this level YY, on left limb and right limb, the pressure will be same, okay. So equating these two pressures, we will have ρ2g h2 ρ2g in bracket delta h plus h2, that equals to ρ1g in bracket delta h plus h1 plus PA, okay. You can transfer this entire term on right side, so we will have PA equals to ρ2g h2 plus delta h minus ρ1g h1 plus delta h. After that we can open the bracket, okay, and take this delta h common. So delta h common लेने के बाद क्या रहेगा, it will be delta h ρ2g minus ρ1g plus यहाँ पे क्या रहेगा ρ2g h2, so ρ2g h2 minus ρ1g h1, okay. Now here we will put the value of this delta h, so that is small a h2 by capital A. We will have PA equals to small a h2 by capital A ρ2g minus ρ1g plus ρ2g h2 minus ρ1g h1, okay. So this will be the formula for calculating the unknown pressure using single limb manometer, okay. Now remember here this small a, it is very or this capital A, it is very bigger as compared to small a, okay. That means ये suppose 0.1 है और ये 10 है, so 0.1 upon 10 it is 0.001, okay, and that value will be very small, okay. So this term small a h2 by capital A, this can be neglected, okay. So if you neglect this, so simply it will be ρ2g h2 minus ρ1g h1, okay. जो हमारा सिंपल मैनोमीटर जो था हमारा आपने जो ऊपर देखा है, okay. हमने जो YouTube मैनोमीटर देखा था ना, तो YouTube मैनोमीटर में भी क्या था फॉर्मूला, ρ2gh2 minus ρ1gh1, ओके. तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ρ2gh2 minus ρ1gh1, okay. So ρ2gh2 minus ρ1gh1, that means although reservoir is present, but ये जो reservoir के कारण जो effect है, that effect is a negligible effect, but because of the presence of this reservoir, even a small pressure measurement can be done more accurately, okay. So basically YouTube manometer का जो sensitivity है, उसका जो efficiency है, okay, it is increased. जो इसका effectiveness है वो बहुत increase होता है, हम छोटे से बड़ा pressure measure कर सकते हैं using single tube manometer, okay. And the formula is same, ρ2gh2 minus ρ1gh1, okay. So this is a sensitive manometer. Any doubt in single tube manometer? Okay. After that, we will see the next type of manometer, that is inclined tube manometer. Okay. So you can see the figure of inclined tube manometer. Now, in inclined tube manometer, basically, there is a modification of YouTube manometer. In YouTube manometer, basically, the tube is bent in the shape of English letter U. Okay. In inclined tube manometer, the right limb of inclined tube, it is inclined at a particular angle, theta, okay. So there will be some angle of inclination, theta, okay. What will happen when theta equals to 90 degree? Theta 90 degree रहा तो क्या होगा, basically आपका जो inclined tube manometer वो U tube हो जाएगा, okay, because U tube में theta 90 होता है, okay.
तो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर में थीटा का जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 90. Okay, and on this inclined tube, basically, initially you will fill the heavier fluid. For example, mercury या जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है आप उसमें फिल करोगे. ओके, देन जो राइट लिम है, राइट लिम का जो लेवल रहेगा वहां पे एक कैलिब्रेटेड स्केल रहेंगी जो 0 से मैच करती है. ओके, सो बेसिकली जो भी आपका राइट लिम है जिसमें आपने मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल किया है वो लेवल तक ऑलरेडी एक स्केल दी रहेगी जिसका 0 मैच होगा. ओके, तो जब आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है तो आपको सिंपली आपका जो लेफ्ट लिम है यू आर सपोज टू कनेक्ट इट टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड. तो जो भी प्रेशर है वो लेफ्ट लिम पे एक्ट होगा, लेफ्ट लिम विल पुश डाउन, राइट लिम विल राइज. ओके, तो जब राइट लिम राइज होता है तो आपको सिर्फ उसका 0 से कितना रीडिंग है ओके डायरेक्टली एल मेजर करना होता है. ओके, सो एल इज वॉट एवर द रीडिंग विच इज शोन ऑन द स्केल. ओके, सो आपको डायरेक्टली एल मेजर करना होता है. ओके, सपोज हम ये इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर की जगह सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज किया होता तो बेसिकली इन दैट केस हमें जो ये एल है ये एल का जो रीडिंग वर्टिकली मिला होता और वर्टिकली हमें H2 रीडिंग मिला होता. ओके, वर्टिकली हमें H2 रीडिंग मिला होता, इंक्लिनेशन के कारण हमें L मिल रहा है और वर्टिकली हमें H2 मिला होता. ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस ट्रायंगल एन इमेजिनरी ट्रायंगल. तो ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है and this length is H2. Okay, so what will be sin theta? What will be sin theta? Sin theta will be opposite H2 upon hypotenuse length L. Okay, so sin theta is equals to H2 by L. So what is the relation between L and H2? So L is equal to H2 upon sin theta. H2 upon sin theta. Okay, अभी sin theta का थीटा एंगल जो है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 0 रहा तो बेसिकली वो आपका एल ट्यूब हो जाएगा. ओके, थीटा 0 रहा तो, और एल ट्यूब में मेजरमेंट नहीं कर सकते. ओके, एंड दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज आल्सो ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री बिकॉज 90 डिग्री रहा तो वो यूट्यूब मैनोमीटर हो जाएगा. ओके, तो थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90. ओके, सो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है. ओके, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है. Okay, so because of that the value of sin theta is always greater than 0 and less than 1. Okay, that means ये जो denominator का value है this is always less than greater than 0 and less than 1. Okay, so as it is always greater than 0 and less than 1 therefore L is always greater than H2. Okay, L is always greater than H2. That means आप एकदम स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हो और यहाँ पे H2 का वैल्यू सपोज आपको यूट्यूब मैनोमीटर में 1 mm 2 mm मिलता था तो आपको इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर में कितना मिलेगा 5 mm 7 mm. ओके, दैट मीन्स 1 mm 2 mm यूट्यूब मैनोमीटर में आपसे ह्यूमन एरर के कारण निगलेक्ट हो सकता था, प्रेशर मेजरमेंट आपका गलत हो सकता था स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट के लिए. बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू जो है वो 10 mm 20 mm मिलने वाला है और वो भी इंक्लाइन स्केल पे 0 के रेफरेंस से, 0 से कितना जाता है. ओके, देयरफॉर जो आपका प्रेशर मेजरमेंट का एक्यूरेसी है ओके वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर. देयरफॉर इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर इज आल्सो अ सेंसिटिव मैनोमीटर बिकॉज a very small pressure measurement can be more accurately okay it can be detected using inclined tube manometer. Okay, so working principle समझ में आया सबको how the inclined tube manometer works. Okay, after that we will see the derivation of inclined tube manometer. So let L is the length of heavier liquid. Okay, जो heavier liquid में जो भी reading दिखा रहा है that reading is L from level XX. Okay, and theta is the angle of inclination. Whatever आपका जो YouTube है inclined tube है उसका
angle of inclination is theta. Okay, and H2 is the vertical rise, okay, of heavy liquid in right limb. कभी हम YouTube manometer use करते थे तो वहाँ पे H2 मिलता था. Okay, so just we had seen sin theta क्या होता है, H2 upon L. Therefore H2 equals to L sin theta. Okay, therefore the pressure at A, प्रेशर एट ए के लिए हम डेरिवेशन लगाएंगे, हम लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब को इक्वेट करेंगे. ओके, सो वी कैन से व्हाट एवर द प्रेशर एट ए. ओके, सो राइट लिम्ब लेफ्ट लिम्ब में H2 और ρ2g H2. ओके, यूट्यूब के लिए हमने इक्वेशन यूज किया है, तो यूट्यूब का इक्वेशन क्या होता है, ρ2g H2 माइनस ρ1g H1. ओके, यहाँ पे H2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो H2 इज L sin थीटा. सो P of A is L, यहाँ पे L टाइप रह गया है, so it is L sin theta, L sin theta into ρ2g minus ρ1g H1. Okay, so using this formula you can simply find out whatever the unknown pressure. Okay, small pressure, precisely you can measure the small pressure using inclined tube manometer. Then after seeing two type of sensitive manometer, we will see the next type of manometer, that is called as differential manometers, or they are also called as differential U-tube manometers. Okay, so this differential U-tube manometer is almost similar, okay, to U-tube manometer, but the only difference is U-tube manometer one end is always open to atmosphere. Okay, U-tube manometer में क्या था, U-tube manometer में one end is always open to atmosphere, while other end is connected to the point where pressure is to be measured. Okay, and U-tube manometer will give you whatever the pressure of the system. Okay, point A पे कितना pressure है, point B पे कितना pressure आपको find out करना है, तो आप U-tube manometer use करोगे. But differential U-tube manometer are basically used to measure the difference of pressure between 2 points. Okay, that means suppose this is pipe A और point A, this is pipe B और point B, आपको इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है. ओके, या फिर कोई एक पाइप है, सिंपल पाइप है और पाइप के दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और आपको इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना है. सो हियर यू विल कनेक्ट डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर. ओके, तो डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर के दोनों एंड जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं होते हैं. Okay, and they will not give you the pressure either at A or B, it will always give you the pressure difference. Okay, so differential manometers are the devices used for measuring the difference of pressure between 2 points in a pipe or 2 different pipes. Okay, the differential manometer consists of a U-tube which is filled with heavier fluid or manometric fluid. Okay, and 2 ends are connected to the point where pressure is to be measured. Okay, so is this clear? Okay, after that, a working principle. Now consider the pressure of point pipe A or point A is greater than pressure of pipe B or point B. Okay, so what will happen, whatever the pressure difference PA minus PB, इनिशियली क्या होगा, दोनों के लेवल सेम रहेंगे. ओके, दोनों के लेवल सेम रहेंगे y. ओके, देन whatever the pressure difference PA minus PB, जो प्रेशर डिफरेंस है PA minus PB, so this pressure difference will going to act on the pipe. सपोज A का प्रेशर ज्यादा है तो पॉइंट जो लिम्ब है कनेक्टेड टू A, वहां पे प्रेशर डिफरेंस एक्ट होगा, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस विल गोइंग टू पुश द लिक्विड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में बेसिकली लिक्विड राइज होगा. ओके, कभी B का प्रेशर ज्यादा रहता था तो B के साइड के लिम्ब में फॉल होता था और राइट साइड में लेवल राइज होता था. तो जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर डिफरेंस के कारण हेवियर फ्लूइड पुश होता है नीचे, और राइट साइड में उसके ऑपोजिट साइड में राइज होता है जहाँ प्रेशर कम है. ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी लेवल ऑफ हेवियर फ्लूइड है, लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, वो मेजर करना होता है. ओके, आपको यहाँ पे स्केल दी होती है दोनों साइड में, तो आपको H1 का रीडिंग H2 का रीडिंग लेना होता है और H1 माइनस H2 करके H निकालना होता है. Okay, so in this way you can do the pressure measurement. So is this clear, differential manometer?
Remember, they are always used to measure the pressure difference. Okay, so the most commonly type of differential manometers which are used, they are YouTube differential manometer जो हमने देखा है, और एक सेकंड होता है inverted YouTube differential manometer, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं. Okay, so first of all we will see YouTube manometer. Okay, so this YouTube manometer, it can be used to measure the pressure difference between two pipes which are at different level as shown in case A, or they can be used to measure the pressure between two pipes which are at same level, or एक ही पाइप के दो सेक्शन which are at same level. Okay, so different elevation पे भी हम differential YouTube manometer use कर सकते हैं, और same elevation पे भी हम YouTube manometer use कर सकते हैं. Okay? After that we will see the differentiation. Now consider H is the difference of mercury level in the tube, Y is the distance of center B, okay, in the right limb, then X is the distance of center A from mercury level in right limb. Okay, that means यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं है, ये X है. Okay, ये X है. X is the distance of center of A from mercury level in right limb. Then let ρ1 and ρ2. Okay, these are the density. जो पाइप A में जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी ρ1 है, पाइप B में जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी ρ2 है. ओके, एंड जो हेवियर फ्लूइड है बेसिकली मर्क्यूरी यूज करते हैं तो उसका हम ρg बोलेंगे. ρg इज द डेंसिटी. ओके, सो टेकिंग द डेटम एज xx, ये जो लेवल xx है इसको हम डेटम लेंगे, और लेफ्ट और राइट साइड से हम इक्वेशन डिराइव करेंगे अप टू xx. ओके, so remember always starts from pipe. Okay, so first of all हम right limb का लेंगे. So right limb का क्या रहेगा, unknown pressure PA. Okay, so it will be unknown pressure PA plus हमें x की तरफ कहाँ मूव होना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, x प्लस h. ये h है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x प्लस h. और वहां पे फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड हमारा जो भी फ्लूइड का डेंसिटी ρ1 है, दैट फ्लूइड इज प्रेजेंट. ओके, सो इट इज ρ1g h1 प्लस x प्लस pa. ओके, सिमिलरली अभी राइट लिम्ब में इक्वेशन लगाएंगे. राइट लिम्ब में अननोन प्रेशर इज pb, सो pb प्लस, रिमेंबर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में फ्लूइड कौन सा है, ρ2. ओके, सो इट विल बी ρ2g y. ओके, और ये जो डिस्टेंस h है, h में कौन सा फ्लूइड है, ρg. सो यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, ρg इंटू g इंटू h. ओके, और ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एडिशन होगा, और अननोन प्रेशर pb रहेगा. ओके, सो प्रेशर ऑन द राइट लिम्ब इट विल बी pb प्लस ρ2g y plus ρg into g into h. Okay, so this will be the pressure in right limb. After that we will equate. Okay, we will equate both the pressure on left and right limb. Okay, so we will have ρg ρ1g in bracket h plus x plus ρa, that equals to ρg into g into h plus ρ2g y plus pb. Okay, आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर दिस pb लेफ्ट साइड, एंड ये जो टर्म है इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे विद नेगेटिव साइन. वी विल हैव pa माइनस pb इक्वल्स टू ρg into g into h plus ρ2gy minus ρ1g into h plus x. Okay, so, finally we will have, you can open the bracket and you can take this hg common. Okay, यहाँ पे hg है और यहाँ पे भी hg आएगा, so it will be hg, यहाँ पे ρg माइनस यहाँ से ρ1 कॉमन लिया, सो ρg माइनस ρ1 प्लस ρ2gy. okay, this is ρ2gy minus ρ1gx, so this will be the final equation. okay, after that suppose दोनों सेम लेवल पे रहते थे, तो बेसिकली x इक्वल्स टू y रहता था, दोनों सेल लेवल पे रहते थे. ओके, सो बेसिकली x और y सेम है, मतलब सेंटर ऑफ a फ्रॉम टॉप लेवल दैट इज आल्सो x, और b का भी जो ये डिस्टेंस है ये y, ये भी सेम रहता था, सो x इक्वल्स टू y. तो आप x इक्वल्स टू y पुट कर दोगे. ओके, यहाँ पे ρg
रो टू जी वाई और रो वन जी एक्स। ओके, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे, बट एक्स कॉमन होके रो वन माइनस रो टू माइनस रो वन हो जाएगा। ओके, तो आप कभी सेम लेवल है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो इक्वेशन को। सो इज दिस अंडरस्टूड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर? ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई, ये आपको इतना याद रखना है कि हम ये इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। बात का तो सिर्फ इक्वेट करना होता है और आपको वैल्यू पुट करके जो अननोन चीजें वो फाइंड आउट करनी होती है। आपको ये इक्वेशन कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं ये आना चाहिए। इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, अननोन प्रेशर को वैल्यू दे देने का पी ए पी बी, देन वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो प्लस साइन यूज करना है। उसके बाद में वो जो फ्लूइड है जितने स्पेस में, उसका डेंसिटी इंटू जी इंटू कितना डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ऑन मैनोमीटर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर इज different inverted U-tube manometer. Okay, now this inverted differential U-tube manometer, they are also sensitive manometer. Okay, अभी basically simple differential U-tube manometer का drawback क्या है? Suppose there are two pipe A and pipe B. Okay, suppose A का जो pressure है that is 1.01 bar. Okay, और point B का pressure कितना है 1 bar. ओके, तो आपको कितना प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, 0.1 माइनस 1.01 माइनस 1, दैट मीन्स 0.01 बार प्रेशर मेजर करना है। ओके, और आपको इतना स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है और आप सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज करोगे। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में फ्लूइड कौन सा होगा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ हेवियर फ्लूइड। ओके, उसका 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है और इतना हेवियर फ्लूइड होने के कारण जब आप इतना छोटा प्रेशर मेजर करोगे तो ये प्रेशर के कारण जो हेवियर फ्लूइड है वो मूव ही नहीं होगा। ओके, तो इतना स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट इट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग सिंपल डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। सो फॉर मेजरिंग very small pressure difference more precisely and more accurately, basically inverted U-tube manometers are used. Okay, so what happens in inverted U-tube manometer, again there are two differential there are two pipes where pressure is to be measured, and यहाँ पे जो U-tube रहेगा it will be in inverted U position. Okay, और इसमें हम जो fluid यूज करते हैं वो fluid का specific gravity जो है it is less than specific gravity of fluid in pipe A. Okay, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, इट इज आल्सो लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप बी। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एक भी फ्लूइड से ज्यादा होगा तो बेसिकली ये हेवियर फ्लूइड हो जाएगा और इन्वर्टेड पोजीशन में ये हेवियर फ्लूइड नीचे आके वो पाइप में सेटल हो जाएगा और वो लाइटर फ्लूइड ऊपर आ जाएगा। ओके, बिकॉज हमें पता है जब भी दो फ्लूइड का हम मिक्सचर करते हैं तो जो हेवियर फ्लूइड होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और लाइटर फ्लूइड फ्लोट होता है। ओके, तो रिमेंबर ये डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में केयर इज ऑलवेज टेकन कि जो भी आपका सिस्टम का फ्लूइड है, ओके, इन पाइप ए एंड बी, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाटएवर द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ओके, सो बेसिकली इस केस में इथेनॉल, मिथेनॉल, ऑयल, अल्कोहल ये यूज किए जाते हैं इन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, अभी बेसिकली क्या होता है कि इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में लाइटर फ्लूइड यूज किया है तो एकदम स्मॉल से स्मॉल, और ये जो हमारा फ्लूइड है सिस्टम का ये हेवियर फ्लूइड है, तो हेवियर फ्लूइड लाइटर फ्लूइड पे जब छोटा सा भी प्रेशर मेजरमेंट रहेगा तो उस टाइम पे जो फोर्स अप्लाई करेगा तो एज इट इज अ लाइटर फ्लूइड स्मॉल फोर्स के कारण भी वो इजीली मूव हो जाता है। ओके, वेरी इजीली मूव हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एच। ओके, और बेसिकली लाइटर फ्लूइड होने के कारण आपको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, लाइटर फ्लूइड होने के कारण आपको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, so this is the principle of working of inverted U-tube manometer. Quickly we will see the derivation in 2 minutes and we'll end today's lecture. So let H1, it is the height of whatever the liquid in left limb. Okay, so left limb में basically ये जो H1 है, okay, ये जो left limb का level है उसका सेंटर ऑफ ए से डिस्टेंस है।
Similarly, H2 is the height of liquid in right limb from center of pipe B. Then H is the difference of liquid level. Rho 1 is the density of liquid A and rho B is the density of liquid B, and rho S it is the density of lighter fluid. Then let pressure at A is PA, pressure at P is BB. Okay, so we will take the datum as XX and we will find out the pressure in left limb. So left limb में basically हम start करेंगे point A से. So point A का pressure कितना है? Unknown pressure PA plus we are going in upward direction. So upward direction में negative sign. Fluid कौन सा है? Level XX तक fluid is rho 1. Okay, जिसका specific gravity rho 1 है. Then distance is h1, so it will be rho 1 g h1 and upward direction में so negative, so it is pa minus rho 1 g h1. Okay, similarly right limb में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो different fluid है. Okay, तो आपको दोनों को separately लेना है. So we'll start from unknown point pb. So pb के बाद आपको upward direction में जाना है. So minus fluid कौन सा है? rho 2. distance कितना है? h2. So minus rho 2 g h2. Then और ऊपर जाना है तो वहां पे फ्लूइड चेंज हो रहा है. फ्लूइड कौन सा है? रो एस और डिस्टेंस कितना है? एच. सो माइनस रो एस जी एच. ओके, सो इट विल बी पीबी माइनस रो 2 जी एच 2 माइनस रो एस जी एच. ओके, उसके बाद में ये दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है. सो पी ए minus rho 1 gh1 that equals to pb minus rho 2 gh2 minus rho s gh. After that pb को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, rho 1 gh1 को राइट साइड में ट्रांसफर करो. So it is pa minus pb that equals to rho 1 gh1 minus rho 2 gh2 minus rho s gh. Okay, so in this way you can find out the unknown pressure using inverted U-tube differential manometer, and even very small pressure measurement can be done more accurately using inverted U-tube manometer. Therefore, it is also an sensitive manometer. Okay, so we'll stop today. We will see the problem on differential manometer in next lecture, and we will see the mechanical gauges and complete this